तो हमारे कल्चर में ये एक चीज़ बताई जाती है कि अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल करो या फिर मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल रखो, ज़्यादा इच्छाओं के पीछे मत भागो। तो क्या इस टाइप की आइडियोलॉजी या बिहेवियर आपको लॉन्ग टर्म में सेटिस्फाई होने में या फिर वो एक जो सेंस ऑफ काम है, पीस है, उसे अचीव करने में मदद कर सकती है? तो इसको ना हम दो पर्सपेक्टिव्स में देखते हैं। पहला एंगल देखते हैं कि हमारे पीस एंड काम एंड सेंस ऑफ रिलीफ के साइड से। वहाँ पे आई थिंक इससे बेटर कोई पर्सपेक्टिव है ही नहीं। रीज़न बीइंग कि इफ़ यू स्टार्ट लिमिटिंग योर डिज़ायर्स, obviously the expectations that you have from things get lower, and if your expectations are lower, the faster you become happy, because happiness is just meeting your expectations or desire, right? तो वहाँ से the state of content that you are at is always much more than having a lot of desires, having things about कि ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है। तो पहला तो वो वाला एस्पेक्ट हो गया। एंड आई थिंक we also have to understand कि this aspect, which is a mindset, does not reflect on material things, so to say. It is minimalism just does not mean कि मैं कम सामान रखूँ, मैं कम ये करूँ. It means attachment to those things, ओके, right? या So minimalism does not mean I stop earning money. It means where I spend it. Am I spending it to fulfill my material desires, or am I putting it to good use for myself and for the society? That is what minimalism means, मेक सेंस, या right? And the other part of it then comes from this exact nature that if you are limited to, say, limited resources in terms of what you want to purchase or where you want to spend, then you won't even earn a lot to be able to do that. But we need to understand that the world that we live in, everything is driven through money. I mean, money is a means. Obviously, it is not your final goal, but you need money to be able to do anything, be it good or bad. Money is required. तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कम अपने एम्बिशंस कम कर दो इन टर्म्स ऑफ अर्निंग, और यू से कि नहीं यार, अगर हर बंदा ही बहुत कम कमाने लगे, मिनिमलिस्टिक रहेगा, तो व्हाट हैपन्स टू सोसाइटी, वेयर या डू यू स्टैंड एज अ नेशन और स्टैंड एज अ स्टेट? तो वहाँ पे यू नीड टू इंश्योर दैट येस, यू हैव टू generate resources, and for that you have to constantly work. But once you have that, you do not just destroy it on random things, or spend it somewhere where you think कि नहीं, खाली मेरी इच्छा पूर्ति के लिए मैं कर रहा हूँ. Because what then happens is कि when you start doing that, you feel a sense of completeness or a sense of pleasure, and that creates a further desire of pleasure, and that just keeps on increasing, which then leads to that dissatisfaction curve कि मेरी यार एक्सपेक्टेशन ही इतनी ज़्यादा हो गई कि अब मैं उसको अचीव ही नहीं कर पा रहा, सो आई फील कि मैं क्यों कर रहा हूँ कुछ भी. So there needs to be a good balance between where you spend, how much you earn, and how much you are attached to the things that you purchase. राइट, आई गेस दिस इज़ वेरी राइट और आई वुड से इज़ मोर लाइक कि मिसकंसेप्शन दूर हो गया मेरा अभी जो मैं सुन रही थी उसके वजह से, कि मिनिमलिस्टिक लाइफ की डेफिनेशन इट्स मोर अबाउट कि आप सब कुछ कर रहे हो, आप पैसे कमा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन जो अटैचमेंट टू दैट मनी है वो आपकी नहीं है, फिर रिसोर्सेज से वो नहीं है, और ऑब्वियसली देन इट विल लीड कि आप आराम से ये अच्छे चीज़ों में यूज़ कर सकते हो, सोसाइटी को देते वक्त या किसी ज़रूरतमंद इंसान को देते वक्त आपको बुरा नहीं लग रहा है और आपको वो सेंस ऑफ प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन मिल रही है. जैसे ये एक पर्सपेक्टिव हो गया, राइट? बट देयर इज़ अनदर पर्सपेक्टिव जो हमारे जो वानप्रस्थ आश्रम का होता है कि एट अ सर्टेन पॉइंट यू लीव एवरीथिंग एंड देन यू गो एज इन कि आप बहुत सिंपल लाइफ जीते हो, आप सात्विक भोजन कर रहे हो, आपने कोशिश करके बहुत सारी जो प्लेजर की आपकी क्या कहते हैं उसे फॉर्म्स है उसको दूर कर दिया है अपने आप से. तो अगर इस टाइप की लाइफस्टाइल हम जीना चाहते हैं कि काफ़ी सिंपलिस्टिक लाइफस्टाइल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या हम आज के टाइम पे ये कर सकते हैं, और अगर कर भी सकते हैं तो क्या सोसाइटी इसे वैलिडेट करती है या फिर उसके वजह से हम वो ग्रुप से अलग हो रहे हैं, आइसोलेटेड हो रहे हैं और अलग कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ रही है. तो इन दोनों में से क्या क्या हो सकता है एंड व्हाट इज़ योर थॉट ऑन इट? देखो, इससे मुझे लगता है कि आजकल और ज़्यादा एक्सेप्टिंग हो गई है सोसाइटी इन जनरल,
and a lot of people have actually started doing this. So this is slightly different from the state or of Vanprastha Ashram as it used to be earlier. Now what people do is once they've earned enough, say they either go to a retirement home, or people quit their jobs and go to, say, some mountains or plains, and they get a space of land, they do farming, organic farming है वो पूरे society में contribute करते हैं. तो दैट इज़ नॉट कंप्लीट asceticism कि आपने सब कुछ नहीं त्यागा है, यू आर स्टिल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, बट यू रिड्यूस्ड योर एक्सपेक्टेशन. सो दैट इज़ वन फॉर्म ऑफ a practical form of rather that Vanprastha Ashram that you can go into right now. But the true meaning of that was to डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ मटीरियल पोजेशंस. तो जो एक संत की लाइफ होती है, एक साधु की लाइफ होती है, विच अगेन यू सी in multiple places these days. You'll have so many Jain monks who are living that lifestyle devoid of all material possessions. You have other sects also where you'll find these sadhus. तो उनका यही objective है that they've understood the reality of life, and that is what they've inculcated in their everyday lifestyle. But again, it is not practical for everyone. That is a very, very small percentage of people who can actually leave everything and go on to that path. But it is about the principles that okay, you cannot leave everything, but what is that level to which you can go to? So it depends on multiple factors कि आपकी आज के टाइम पे responsibilities क्या हैं. You have parents to take care of, you have, say, a wife, you have children. Can you ask everyone to leave and then go on this path जहाँ पे आप अकेले साधना कर रहे हो? Or it can also be कि okay, you have this setup with you, you have a set of responsibilities. How can I ensure that I am fulfilling my duties and demands that my family has from me? And within that setup, I am able to detach myself from the various things which I used to डू अर्लियर, या फिर मैं ओवरली कंज्यूम्ड रहता था जिस चीज़ों में, सपोज जिन चीज़ों की मुझे नीड भी नहीं थी. आई यूज़ टू ट्रैवल एक्सटेंसिवली, आई यूज़ टू परचेज एक्सपेंसिव कार्स, आई यूज़ टू इन्वेस्ट अ लॉट इन प्रॉपर्टीज. बट नाउ दैट you and your family together have made that decision, only then you can move into that stage where you say okay, this is the lifestyle that I choose for myself. I maybe get a small hut or a house or a bungalow in some remote village where you have enough resources to sustain that lifestyle, and you lead a high quality, good quality life where you get good organic food, you sleep on time, you don't have a lot of stress to earn because you've already done that for yourself, and the things that you're doing on a day-to-day basis are helping you sustain that enough lifestyle for you. Right. And like the second question which I was asking, ki, even if I am accepting that lifestyle, because of my lifestyle, will society isolate me, or will that isolation will impact me on a adverse? No, I don't think that's the case, because even now, if you go to a lot of these places, you'll see so many people who've quit their jobs. They've set up hostels in these locations, and as I was saying earlier, that people have now become more accepting of this, and especially post COVID, where people have realized that running behind money does not save your lives. Also, when you're on your deathbed, it does not matter how many billions of dollars you have in your account. It's about the quality of life that you lead. It has become more acceptable now, where people have started taking breaks from work. They give time to themselves, and not just regular people. You see a lot of celebrities who've taken break from either work, be it Virat Kohli, be it Deepika, or a lot of other folks. You'll see daily night hosts taking that break for themselves to explore what they actually are, what is their purpose in life, and just giving themselves that stability